Good morning. Let me start the things. So what I was telling that I started with foundation and then purpose of foundation. Then I told you about all the basic definitions. Those basic definitions should be very much clear to you. In the end of the class, again I repeat those basic definitions. You should be clear with what is meant by foundation, what is meant by footing, what is gross pressure intensity, what is net pressure intensity, then what is ultimate bearing capacity, and then what is net ultimate bearing capacity, then net safe bearing capacity, then safe bearing capacity, then allowable pressure. Each and every definition you may be able to write all the things, but you should understand it very well. What is actually meant by this one? If you know that one, no, so the rest of the things will be easy. So nothing much is there in this chapter. If you learn these basics, then how the soil is going to fail, that I will tell. We will discuss it in detail today. So the soil will fail by either by shear failure or by settlement. Okay, so what happens whenever the load is applied, though the soil may tilt, shear failure may takes place. That is the one reason. And second reason is settlement may cross the limits. Settlement may cross the limits. What I mean is, suppose the permissible limit in your area is 2 mm, but whenever you apply the load, your settlement is more than that one. This is detrimental. This is very dangerous to the building. That care also you have to take. That care also you have to take. So these are the true criterias which are basic needs for the design of a building or design of a foundation. So general shear failure, shear failure and settlement. Now in in shear failure, there are three things. One is general shear failure, second is local shear failure, third is punched shear failure. Once again I repeat you, in shear failures there are three types of failures. One is general shear failure, second is local shear failure, third is punched shear failure. Now you should be able to know what is general shear failure, what is local shear failure, what is punched shear failure. As I told you in the beginning itself, when the cross pressure intensity means whatever the pressure is coming on the soil is more than the ultimate bearing capacity. समझ में आपको? When the whatever the load is coming on the soil, if this load is more and your bearing capacity is less, so then definitely the soil is going to fail. Isn't it? That's the basic criteria. Suppose आपके खर्चे बहुत है और आमदनी कम है, then you are going to be bankrupt. Isn't it? The same thing here. If the load is more, bearing capacity is less, then it is going to fail, either by shear or settlement. Now we are discussing about the shear failure. We are discussing about the shear failure. Now one more question. You should know that the soil fails maximum times by shear only, not by tensile or compression like your structural members. Like your structural members, steel or these things, the major failure part or major stress in the soil is shear stress only. Okay, so now in this shear failure there are three types. One is general shear failure. This is the very important. I will tell you: general shear failure, local shear failure, and punched shear failure. In easy competitive exams you will get questions on this one, and most importantly the whole chapter is based on this one only. Whenever you solve the problems, you have to decide that whether this is general shear failure, this is local shear failure, or this is punched shear. So as I was telling, when the bearing capacity is less, load is more, the soil is going to fail. But how much less it is, bearing capacity, that also matters. If it is totally weak, your soil is totally weak. Suppose करो आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं और आपके जेब में 5 रुपए भी नहीं है. So such is the situation. Then what happens here? Punched shear failure take place. मतलब आपका bearing capacity बिल्कुल lowest है
और आपके ऊपर लोड बहुत गिर रहा, तो क्या होता, जो ही आप लोड लगाते द बिल्डिंग विल सिंक डाउन, स्ट्रेट डाउन इट गोज, साइड के सॉइल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई स्ट्रेस ट्रांसफर नहीं होता, nothing will happen, your building or road whatever the thing is, it starts sinking at the rapid rate. So this type of failure is called punctured shear failure. मतलब यहां पर आपका जो सॉइल रहता वर्स्ट बेकार रहता सबसे, सपोज करो सॉइल उससे थोड़ा अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास आप 100 रुपए खर्च कर रहे तो चलो आपके पास 50 रुपए है. So such type of failure where the bearing capacity is little better than punctured shear failure is called local shear failure. Is called local shear failure. What happens in punctured shear failure? What is the diagram for that one? What is the load settlement curve for that one? Everything I will explain you. सपोज करो आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, आपके पास 90 रुपए 80 रुपए है, तो योर सिचुएशन इज बेटर समवॉट. 10-20 रुपए कम है, आप यू विल एडजस्ट समवेयर हियर एंड देयर एंड यू कैन कैरी ऑन. So the same thing is here called soil. It is general shear failure. तो जनरल shear failure में हालत उतनी खराब नहीं है जितनी punched shear failure में रहती है. तो when your soil is too good, I mean not good, if it is too good means there is no question of failure, but if it is nearer to the good, so then general shear failure takes there. Second, medium soil is there, where the bearing capacity is medium. There you will find local shear failure. There you will find local shear failure. And अगर से आपका सॉइल पूरी तरह वीक है, किसी भी काम का नहीं है, you are helpless, such is the punched shear failure. So what happens in general shear failure, what happens in local shear failure, and what happens in punched shear failure actually, that we are going to decide now, discuss now, that we are going to decide now. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जनरल शेयर में, जनरल बात बता रहा हूं मैं आपको, जनरल शेयर फेल्यूर में आपको वेल डिफाइंड डायग्राम मिलता, स्ट्रेस डायग्राम मिलता लोड का, वेल डिफाइंड, जबकि लोकल शेयर फेल्यूर में पूरा डायग्राम नहीं मिलता, मीडियम मिलता आपको, और पंच्ड शेयर फेल्यूर में किसी टाइप का डायग्राम नहीं मिलता आपको. ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग. ओके, that's the first thing. Second thing is general shear failure में जो रहता load settlement curve. This is very important. What is the load you are applying and what is the settlement? That is very very important calculation. आप इतने लोड पे कितना सेटलमेंट हो रहा है, इतना लोड पे कितना सेटलमेंट हो रहा. You will draw a graph here. Whenever you study in detail about these failures, no, you will draw a graph. Okay, on the y-axis you take loads and you take settlements. Okay, so when you take load versus settlement, what happens? No, in general shear failure, no, suppose if you are applying the load, in the beginning there is no settlement. If you increase the load, no settlement. If you increase the load, no settlement. If you increase the load, no settlement. But after 4 or 5 times, when the load is increased, थोड़ा settlement होगा, 1 mm हो गया समझिए. उसके बाद और लोड बढ़ाए और सेटलमेंट बढ़ता, थोड़ा और लोड बढ़ाओ और सेटलमेंट बढ़ता. इफ यू इंक्रीज फर्दर लोड, अगेन द सेटलमेंट विल इंक्रीज. इफ यू ऐड मोर लोड, अगेन सेटलमेंट विल इंक्रीज. नाउ यू विल कम टू अ पॉइंट वेयर मैक्सिमम लोड इज देयर एंड सेटलमेंट इज देयर. ये मैक्सिमम कैसा है, आपको कैसा मालूम होता? क्योंकि इसके बाद अगर से आप लोड डालना भी बंद किए तो सेटलमेंट अपने आप होना शुरू हो जाता. So when I show the diagram, you will come across it. And this particular point is called maximum load. And this you will find in case of general shear failure only. मतलब general shear failure में आपको ये जो maximum load का point है, clearly you can identify. Clearly you can identify this one. But this is not with the case of local shear failure and shear failure. पंच्ड शेयर फेल्यूर. जनरल शेयर फेल्यूर में आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाता, दैट इज मैक्सिमम लोड. आपको लोकल शेयर फेल्यूर में ढूंढना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब आप स्ट्रेट लाइन रूट लाइन में तो वो रीजन मिल जाता, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं मिलता जहां पर मैक्सिमम लोड लगने वाला है.
पंच्ड में तो आपको मिलता है नहीं, शुरू से ही आपको सेटलमेंट स्टार्ट होने जाता है. So this is the major difference between general shear failure, local shear failure and punched shear failure. So whenever you draw a load versus settlement curve, whenever you draw a load versus settlement curve, you will come across a, point that is what is called general maximum load. That load is called a maximum load. That load is called a maximum load. Got it? So I will explain in detail. Again, I will tell you this starting portion is little bit boring for you. I mean, a general shear failure, local shear failure definition सब ऐसे दिख रहे हैं आपको, but ये आपको जरा थोड़ा डिटेल में आप समझने की कोशिश करो. Once we derive in the next class, that is Terzki's analysis, no? Terzki's analysis निकाल के हम bearing capacity का एक बार फॉर्मूले निकालेंगे, फिर उसके बाद everything is interesting. I mean, little bit interesting we'll get in the subject, but in the beginning all these things are a little bit boring type of this. So I will explain now what is general shear failure. Actually what happens. So मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि जनरल शेयर और लोकल में पंच्ड में जो सॉइल है थोड़ा बहुत अच्छा जनरल शेयर फेल्यूर का ही रहता है, थोड़ा बहुत अच्छा जनरल शेयर फेल्यूर का रहता है. इन द केस ऑफ जनरल शेयर फेल्यूर, कंटिन्यूअस फेल्यूर surfaces. Just a minute, a call is there. ठीक है, लो ये क्लास के बाद मैं बताता हूँ, डिसाइड करेंगे. मैं क्लास ले रहा हूँ इधर. ओके. So okay, sorry. So what I was telling that in the general shear failure, in the case of general shear failure, continuous failure surfaces develops between the edge of the footing and the ground surface. It means that one figure I will show you, just to see here, we will come into a idea. So see, in case of general shear failure, so failure starts from here and it ends at the ground level. It ends at the ground level. कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ. This is the footing. You are applying the load. पहले क्या होता मालूम है, यहाँ पर आपको बताया था मैं, पहले क्या होता, पोर्स रहते, सॉइल में पोर्स रहते. सो एंटायर लोड जो रहते पहले पोर्स लेते, सॉइल पोर्शन पे नहीं आता. सॉइल में और दूसरों में फर्क क्या है, एक बात अच्छी तरह, दिस इज द मेजर डिफरेंस. प्लीज ऑलवेज यू कीप इट इन माइंड, यू शुड नो इट. जब whenever the load is applied on soil,
और स्टील और सम अदर टिम्बर यू आर टेकिंग, तो वहां पर क्या होता, डायरेक्ट सॉलिड पोर्शन पे लोड आता, लेकिन सॉइल में ऐसा नहीं होता। सॉइल इज मेड अप ऑफ, सॉलिड पोर्शन तो ही है, साथ में वाइड्स रहता, थ्री फेज सिस्टम आप पढ़े होंगे, तो ये वाइड्स क्या है, पहले लोड ले लेते, तो वाइड्स में भी कभी एयर रहते, कभी वाटर रहता। अगर से वाइड्स में एयर है तो इट इज कॉल्ड ड्राई सॉइल, वाइड्स में अगर से एयर है इट इज कॉल्ड ड्राई सॉइल, अगर से वाइड्स में वाटर है इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉइल। तो व्हेनेवर यू अप्लाई द लोड ऑन द सॉइल, द एंटायर लोड इज टेकन बाय पोर्स ओनली, और पहले एयर है तो एयर निकल जाता, इसको बोलते हम, दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन। अगर से पहले उसमें वाटर है तो वो चला जाता, इट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। So this is the major difference between compaction and consolidation. तो समझ में आया, आप डिटेल में पढ़ो जियोटेक पढ़ते समय। तो यहां पर क्या हो जाता, पहले whatever the load you have applied is taken by pores only, पोर्स के बाद सॉलिड पोर्शन पे आता, सॉलिड पोर्शन पे आने के बाद सॉइल बिहेव्स लाइक एन इलास्टिक मटेरियल। शुरू में तो उसमें इलास्टिसिटी रहती, लेकिन याद करो सॉइल में इलास्टिसिटी बहुत कम रहती कंपेयरिंग टू आपके स्ट्रक्चरल मेंबर्स में। तो यहां पर क्या होता, शुरू में एक व्हेनेवर यू अप्लाई द लोड, यहां का जो पोर्शन है बिलो द फुटिंग इट बिहेव्स लाइक इलास्टिक। तो इलास्टिक में जैसा होता, लोड अप्लाई जाते ही बढ़ जाता, फिर लोड निकालते ही कम होता, व्हाटएवर द इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज दैट इज फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर सॉइल, that is followed by this particular soil. So when you apply the load here, when you apply the load here, so here it will behave like a elastic, और यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फिगर बनता, मतलब इधर से बढ़ते जाके ऐसा ट्रायंगुलर आता, एग्जैक्ट ट्रायंगुलर नहीं आता, इसीलिए whenever, अरे हेलो, हाँ ठीक है कोई बात, ओके ओके, हाँ एडजस्ट कर लो, हाँ। So now the thing is, this is not, it behaves like a elastic one. तो यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल बनता, this is called elastic zone. एक बात और याद रखो, ये रिसर्च के हिसाब से ये इमेजिनरी फिगर्स बनाते हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए। एक्चुअली फील्ड में जब भी लोड होता तो आपका सॉइल एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं बनता, बट इट गिव्स अ रफ आइडिया ऑफ ट्रायंगुलर शेप, it gives a rough idea of triangular face. इसके बाद क्या होता, when it comes this elastic part, तो एक बार पोर्स लोड ले लिया आपके सॉइल, ये जरा प्रोसीजर पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करो। सी अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, पासिंग और फेलिंग इज एंटायरली, आई मीन दिस इज आउट ऑफ, इतना कोई इतना इसके बारे में सोचो ही मत आप, पास होना फेल होना इतना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर पास होना। what I want to say is try to understand the subject very well so that it can be beneficial to you in your other purposes. That is very important here. So again and again repeating the same things, मैं जरा बार बार इसको क्यों बेसिक्स को ज्यादा importance दे रहा हूँ कि this may be helpful for you in your exams. Okay, तो यहाँ तक जो है अब ये elasticity portion हो जाता। तो इसके बाद क्या होता, सॉइल प्लास्टिक जोन में जाता। आप डिटेल में एडवांस में सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आप सॉलिड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ रहे हैं। देखो स्ट्रेन है, अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस है, सिक्स टाइप्स के, उसके बाद कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है, डिफरेंशियल, तो वो सब क्या है, इट इज थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां तक इलास्टिसिटी पढ़ता, उसके बाद आप सेकंड पार्ट पढ़ रहे हो प्लास्टिसिटी, तो वो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर आफ्टर दिस द सॉइल विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्लास्टिक पार्ट। और ये जो सारे इलास्टिसिटी के स्ट्रेस रहते अब इसमें ट्रांसफर हो जाते। तो यहां पर आपको इस टाइप का एक पैराबोलिक फिगर मिलता, ये दो जोन में, इधर जैसा बनता फुटिंग के, इधर भी ऐसा ही बनता नेक्स्ट साइड में। उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाता, इफ यू इंक्रीज द फर्दर लोड, इवन थोड़ा प्रेशर ऊपर की तरफ भी जाता, इट इज कॉल्ड हेविंग, it is called heaving. So such a well defined beautiful figure you will get in case of general shear failure. In case of general shear failure you will get a well defined figure, but this is not possible in case of local shear failure and punctual shear failure. तो यहाँ पर आपको whenever you apply the load you will get an elastic zone, then plastic zones, then two pair again plastic zones. Sometimes heaving also takes place when the load is more.
So this is the figure for, जबकि simultaneously I will tell for local shear failure. Local shear failure में क्या होता, पहले तो elasticity, when you apply the load, of course some portion will take here, of course elasticity तो बनी जाएगा, क्योंकि फोर्स लोड लेने के बाद सॉइल लेता, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी रहता है, एक ट्रायंगल जोन बनता है आपका, उसके बाद प्लास्टिसिटी में पूरे स्ट्रेसेस ट्रांसफर नहीं होते, तो ये फिगर, ये डायग्राम कंप्लीट नहीं होता, ये लोकल शियर फेल्यूर में। दिस इज इन केस ऑफ लोकल शियर फेल्यूर। अब देखो कंपैरिजन करो, पंचड़े में क्या होता, पंचड़े में कुछ नहीं होता, जितना है आपका थोड़ा बहुत पहले पोर्स लेते लोड, या तो कॉम्पैक्शन हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा, आफ्टर दैट द लिटिल बिट इलास्टिसिटी विल बी देयर, of course that will be taken and triangle will be formed, but after that no plasticity at all. Whenever the load is increased, it starts going on settlement. So this is the punching shear failure. I hope the type of figure is very much clear you for in general shear failure, in local shear failure, as well as in punched shear failure, as well as in punched shear failure. Are you following me? Okay, this is the figure, well-defined figure, beautiful figure is that. Symmetrical, beautiful figure you will get. And doesn't mean that on practically you will get a same figure like this. Okay, roughly it will be there, and for derivation and research purposes we will make like this only. Lot work is going to is going to be done here, and based on that one these figures are so this is the major difference between general shear failure, local shear failure, and punched shear failure as far as figure is concerned, figure is concerned. Okay, so what he says that in the case of general shear failure, continuous failure surfaces develops between the edges of the footing and the ground surface as shown in the figure. When the pressure approaches the value of QF, the state of plastic equilibrium is reached, initially in the soil around the edge of the footing, and then gradually spreads downwards and then outwards. Ultimately, the state of plastic equilibrium is fully developed throughout the soil above the failure surface. This is all about the whatever the things I have explained there, no? I mean, how it is, the diagram is formed, that only it has been told. First, it will be elastic zone, and when you still increase the pressure, when it is going to reach a value of QF, then plastic zones will be developed. Okay. Now where you will find this type of failure, general shear failure. Remember, general shear failure मैं आपको पहले बता चुका हूं, जितने भी फेलियर हुए ये सबसे अच्छा है सॉइल, इसमें मींस ये सॉइल में थोड़ा रेजिस्टेंस है कंपेयरिंग टू लोकल और पंचड के मुकाबले में, तो ये कहां पर होता, सो दिस टाइप ऑफ फेलियर इज सीन इन डेंस एंड स्टिफ सॉइल, मतलब सैंड अगर से डेंस है तो ये होता, लूज है तो नहीं होता, लूज है तो आपको लोकल उसके भी लूज है तो पंचड में जाना पड़ेगा, और क्ले कैसा रहना आपका, स्टिफ रहना। देखिए आप पैदल चल रहे हैं, अगर से आप पैदल चल रहे समझो, तो कीचड़ है, तो अगर से सूखा हुआ स्टिफ क्ले है तो आपके पैरों को कुछ नहीं होता, दैट विल रेजिस्ट योर आई मीन वट एवर योर प्रेशर इज देयर। लेकिन अगर से पानी वाला पतला सा कीचड़ है तो आप जैसे ही पैर रखेंगे धंस जाएगा। तो सेम थिंग हियर आल्सो, इफ द सैंड इज डेंस, बहुत नजदीक है तो जनरल शेयर फेलियर होता, और स्टिफ रहा क्ले तो भी जनरल शेयर फेलियर होता। लेकिन अगर से ये डेंस की जगह लूज होतेगा तो लोकल शेयर फेलियर हो जाएगा, उसके बाद पंच्ड शेयर फेलियर हो जाएगा, और ये अगर से ये इसका स्टिफनेस कम होते जाएगा, लिक्विडिटी ज्यादा होते जाएगा, तो वहां पर इस टाइप के क्ले में भी लोकल शेयर फेलियर होगा, और भी अगर से वीक है तो पंच्ड शेयर फेलियर होगा। तो किस टाइप के फेलियर सॉइल में क्या फेलियर होता, ये आपको मैं एक और चार्ट भी देता हूं एंड में। तो जस्ट टू रिमेंबर, इन केस ऑफ डेंस सैंड एंड स्टिफ क्ले, the general shear failure is going to take place. General shear failure is going to
takes place. Now, what are its characteristics? I have written here characteristics in a detailed manner. We should know it. First of all, it is continuous, well-defined and distinct failure surface develops between the edge of the footing and ground surface. In the edge of the footing and the ground surface, a well-developed failure surface, you have seen it, a triangle you will get it, then two parabolic will be there, get it, again or two parabolic you will get, go to the upwards, then heaving also you will see, means a well-defined nice figure, well failure surface you will get in case of general shear failure, which is not possible in case of local shear failure, as well as what I mean is punched shear failure. Next, dense or stiff soil that undergoes low compressibility experiences this failure. मतलब सैंड लो डेंस है और क्ले स्टिफ है, जहां कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत कम रहती, वहां पर जनरल शेयर फेल्यूर होता. देयर द जनरल शेयर फेल्यूर टेक्स प्लेस. नेक्स्ट वन, continuous bulging of shear mass adjacent to footing is visible. मतलब यहाँ पर बल्जिंग जो भी हो रहा है शेयर मास का फुटिंग के बगल में, इट इज क्लियरली विजिबल. फेलियर इज अकम्पनीड बाय टिल्टिंग ऑफ फुटिंग. तो यहां पर फेलियर कैसा होता, आपका फुटिंग टिल्ट हो जाता. वैसे जनरल शेयर फेलियर है, लेकिन यहाँ सिंक नहीं होता. सिंक कैसा होता, पंचड में, लोकल में पंचड में कंटिन्यू धसते जाता, यहाँ धसता नहीं, थोड़ा सॉइल में ये रहने से टिल्टिंग होता है. यहाँ पर टिल्टिंग के चांसेस ज्यादा है. यहाँ पर tilting is the main criteria here, whereas sinking is the main criteria in case of punched one, whereas local is the average of these two, general shear failure and punched shear failure. Failure is sudden and catastrophic with the pronounced peak in P delta curve. P delta curve means लोअर सेटलमेंट कर्व. लोअर सेटलमेंट कर्व में यहां पर क्या हो जाता, ये सडन है, एक तो फेलियर सडन है और एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलता आपको. मैं आपको अभी फिगर में यहां बताया. इफ यू सी इफ यू ड्रॉ लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व लाइक दिस, दिस इज द सेटलमेंट, दिस इज द लोड. सो लोड है ज्यादा, सेटलमेंट कम, कुछ नहीं है शुरू में. जैसे जैसा लोड बढ़ते जाता, सेटलमेंट बढ़ते जाता, यहाँ पर लोड आते, यहाँ तक सेटलमेंट आया. तो यहाँ पर आने के बाद आप लोडिंग करो या ना करो, थोड़ा कम हो के फिर ये सेटलमेंट कंटिन्यूस होता. तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम लोड पॉइंट and this is clearly visible, can be established in case of general shear failure, but which is not possible in case of local shear failure, which is not possible in case of local shear failure और punched shear failure. तो this is one of the major differences. मतलब आप जब भी load versus settlement curve बनाते तो you will get a particular point. Got it? So this is about general shear failure. This is about the characteristics of general shear failure. Then this what I was telling you. The length of disturbance beyond the edge of the footing is large. Of course, the length is very large here. State of plastic is reached initially at the footing edge and spreads gradually downwards and then outwards. Of course, after elastic zone, plastic equilibrium will start. Initially, it will be downwards, and after a certain point, it will come outwards, means it will go towards the ground level. It will go towards the ground level. All these are characteristics of general shear failure, but the most important characteristics of general shear failure are these four characteristics. You should know that. What is the strain here? What is the phi here? What is the N here? What is the ID here? That you should know. Means that general shear failure के कुछ statistics है. How it differs from a local shear failure, that you should know here. What the first thing says that general shear failure is accompanied by low strain. मतलब यहाँ strain जो रहता 5% से कम रहता. Strain is very less here, so it is called general shear failure. General shear failure is accompanied by low strain. That is, strain is less than 5%. Whereas when strain is more than 20% is local shear failure. तो याद रखो strain कितना रहता है general shear failure में? It is less than 5%. Less than 5%. Second is
Angle of shearing, C and phi you know very well. Phi is angle of shearing resistance. So angle of shearing resistance, a soil with considerable phi greater than 36 degrees. अगर से 36 डिग्री से ज्यादा हो गया, अगर से 36 डिग्री से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते जनरल shear failure. और phi लेस देन 25 डिग्रीज रहा तो इट इज कॉल्ड लोकल shear failure. तो ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए. स्ट्रेन फॉर जनरल shear failure, strain should be less than 5%. Strain should be less than 5%. Second, phi should be greater than 36 degrees. And third, लार्ज यन. यन मीन्स एसपीटी में, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में हम लोग नंबर ऑफ ब्लोज गिनते, तो यहां पर नंबर ऑफ ब्लोज हमेशा ग्रेटर देन 30 होना चाहिए. नंबर ऑफ ब्लोज एन जो है ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन 30 डिग्री. एंड हाई रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी मीन्स ये कॉम्पैक्ट है क्या डेंस है, हम इस क्वांटिटी से हम डिसाइड करते. ये मैक्सिस का फॉर्मूला है, आप जियोटेक 1 में पढ़े, E maximum minus E minimum divided by E minus E minimum something. So relative density should be greater than 70 degrees. So these are the four criterias. These are the four criterias which are very much, I mean, important for general. From this you can decide that it is general shear failure. तो एक बार और मैं बताता हूँ क्या क्या है ये ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट दिस लास्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके ऊपर ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जनरल शेयर फेल्यूर है, लोकल शेयर फेल्यूर है, बिकॉज समटाइम्स प्रॉब्लम में आपको नहीं देता. सबसे पहला क्या है कि स्ट्रेन शुड बी लेस देन 5%. स्ट्रेन शुड बी लेस देन 5%. सेकेंड, phi should be greater than 36 degrees. Means here considerable angle of shearing resistance is always greater than 36 degrees, and number of blows in SPT should be greater than 30 degrees for this particular type of soil, for this particular type of soil. And it should have high relative density. It should have high relative density, and that is density should be greater than 70 degrees. Greater than 70 degrees. I hope you remember all these datas very well. It is very easy. For general shear failure, strain is less than 5%. Phi is greater than 36 degrees. N should be greater than 30. And relative density, ID should be greater than 70%. ID should be greater than 70%. So I hope now you people are very much, I mean, you are very much clear with what is general shear failure. What is general shear failure? General shear failure में क्या होता है, किस टाइप का फिगर डेवलप होता है, उसके बाद लोड सेटलमेंट यहाँ पर कैसा होता है, और इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और इसके अलग अलग वैल्यूज क्या है. I think this much is very much clear to you now. So now you have a break of 2 minutes. It is a Zoom break. So after that, I will continue what is local shear failure and what is punchless shear failure, and most importantly, what is the difference between general shear failure and local shear failure. From the academic point of view, this is a common question to be asked in whether it is BE or MTech or any exam. Write the differences between general shear failure and local shear failure. Common question generally asked. Okay, based on these value also you can write what is the strain here, what is strain there, what is phi here, what is phi there, what is n here, what is n there, what is id here, what is id there, how is the figure there.